ओके स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैथमेटिक्स पार्ट वन स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस से 2.2 करेंगे. लास्ट टाइम 2.1 आई डिड, सो दिस टाइम 2.2 page 36. Okay. So we have to solve it by factorization. So it is easy. I will start now very quickly. X square minus 15x plus 54 is equal to 0. So in factorization, what you have to do? First take 1 here. अगर नंबर नहीं दिया तो नंबर ले लो. 1 into plus 54, 1 into plus 54 ये बनेगा plus 54. फर्स्ट स्टेप. ओके. तो इसके बाद नेक्स्ट इसका फैक्टर्स लेंगे. मिडिल, वी हैव टू स्प्लिट द मिडिल. ओके. You have to split the middle. Okay, split middle term. तो कैसे स्प्लिट करेंगे? तो ऐसे स्प्लिट करना है इसका जो नंबर 1 नंबर 2. दिस माइनस 15 you can write it small here. Okay, so this number 1 number 2, when we add it we should get this middle term, but when we multiply we should get this. मतलब n1 plus n2 बनना चाहिए आपको -15 and n1 into n2 must be plus 54. Both must be okay. Then it is right, otherwise it is wrong. तो ऐसे स्प्लिट करेंगे. So for that you have to write all possibilities. For 54 का क्या क्या possibilities है. Write that. Okay, so 54 into 1, 54 I think it will go on 9 and 6 also. It will go on 2 table also. 2 I think 2 into 2, then it is 27 into 2, it is 54. It will go in 3 table also. 3 into 1, 18 into 3, it is 54. So and it will go on 9 into 6, 54. So इसके जो possibilities है that will write here. Okay, 27 to 18, 3, 9 and 6. Okay, next so in detail इसको पहले करते हैं factorization. So first 1 into plus 54 minus 54 middle term यहाँ पे आएगा. We have to split this n1 and 2. For that write all possibilities for this. Now take plus minus plus minus or minus plus. Take plus. Okay. So plus 54 into plus 1 is equal to plus 54. Okay. Now plus 54 plus 1 is equal to 55. But यहाँ पर -15 है. It is -15. It is not okay. It's not okay. I mean we cannot take this plus. Okay. And this plus we cannot take it. Now take minus and minus. Okay. minus 54 into minus 1 plus 54, because minus plus. Minus 54 minus 1 is minus 55. It is okay. It is not okay.
यहाँ पे -15 है, it is -15, not okay. When minus not fitting, so plus not fitting, minus then take plus and minus, okay. So plus 54 into -1 is -54. It is not okay. And this is also not fitting, okay. It is not okay, not fitting. Then take this is minus and plus. It's -54 into +1 is -54. It is not okay. This is not fitting. This number is not coming. This number fit नहीं हो रहा है, ठीक है. This number is not fitting, so you have to discard. You have to take another number. ये number का भी like plus minus trial and error method, okay. So by trial and error method, you will get, okay. So if you practice more, you will get an idea. अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे, कौन सा नंबर इसमें इजीली फिट होगा, ओके. प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके. प्रैक्टिस मीन्स यू कैन गेट एन आइडिया. मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, ओके. मोर प्रैक्टिस. सो वी गेट एन आइडिया कि ये फिट हो सकता है. सो विल टेक बोथ माइनस. सो -9 into -6 is plus 54. -9 - 6 is equal to, we have to first multiply because number 1 into number 2 is equal to plus 54 and number 1 plus number 2 must be -15. तो ये हमारा लॉजिक है. So it will become -15. So it is okay. This is right. तो यहाँ तक तुम्हें समझना है कि मतलब ये फैक्टर इट विल कम बाय मोर प्रैक्टिस, ओके. तो वी गॉट द फैक्टर. नाउ इट इज x इज गिवन, सो वी हैव टू राइट x. नाउ वी स्प्लिट दिस इनटू टू टर्म्स, ओके. सो 1x square -9x -6x, it will come down, plus 54 is equal to 0. Now you will take common. तो कॉमन इसका कैसे लेंगे, x square -9x. तो x you can write x dot x -9x. x is common, so x outside x -9. So you have to take it like this, okay. So it will become x -9 minus common is 6, okay. Common is 6 because 6 into 9 is 54. So common is 6, so we can take it as -6 out. It will become x minus 9 is equal to 0. Y minus, okay, y minus plus. That's why minus will come, okay. So it should be more important to that. And also this and this should match, okay. This and this should match. It should not be like this, x -9 and x plus 9. Means it is wrong. It is x -9, यहाँ पे x -9 ही होना चाहिए, दूसरा रहेंगे तो wrong है, okay. So now we'll take again common, it will become x -9, x -6 is equal to 0. Therefore x -9 is equal to 0 or x -6 is equal to 0. Therefore x is equal to 9, it will go that side, or x is equal to 6 that side. So फैक्टराइजेशन स्टेप ऐसे करना है, ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं अभी. x square plus x minus 20 is equal to 0. Same logic, 1 into minus 20.
or middle term, nothing is given, take it as 1, that is plus 1. Okay. So what are the possibilities for 20? We'll write it 20 into 1, 10 into 2, and 5 into 4. Okay. So by looking at this, I think 5 minus 4 is 1. 5 minus 4 is 1. It is fitting here and here also fitting. So we can take it this plus. See what happens if you take here minus and here plus. So minus 5 into plus 4 is minus 20. Okay. Minus 4 plus 1 is equal to minus 1. Not okay. So that's why we have to take it as plus, take it as minus. So now I will say this, plus 5 into minus 4, minus 20, okay. Then plus 5 minus 4 is equal to plus 1, okay. Then plus 1 we should get. Now you can write it is x. Now you have to split this, okay. So 1x plus 5x minus 4x minus 20 is equal to 0. I will take common, it will become, sorry, it is x square, x out, x plus 5 minus 4 is common, minus 4 into 5 is equal to 20. So 4 is the common, you can take 4, so x plus 5 is equal to 0. Y plus minus plus, that's y plus. So again same thing, so it will become x plus 5, x minus 4 is equal to 0. Therefore x plus 5 is equal to 0 or x minus 4 is equal to 0. Therefore x is equal to minus 5 or x is equal to 4. Okay, now we'll do next problem. Two y square plus 27y plus 13 is equal to 0. First step, 2 into plus 13, 2 into plus 13, that will become plus 26. What are the possible? Middle term is 27, okay, plus 27. Now what are the possibilities for 26? 26 into 1 and 2 into 13, okay. So 26 into 1, 26. 2 into 13 is equal to 1. Write all the possibilities. I have to split this, okay, split. I think 26 plus 1, it will fit, plus x. So it will become 2y square plus 26x, because y 26 into plus 1 is equal to plus 26, okay. And it is plus 26 plus 1 is equal to plus 27, okay. Therefore this is okay. So plus 1x plus 13 is equal to 0. Take common, 2 is common, 2 into 13, y is also common. See, sorry, it is y means we have to write y, okay. It is given y means we write y, okay. Take common, 2 is common, y is common, अंदर रहेगा y and 2 into 13 26, तो अंदर 13 रहेगा प्लस 1 कॉमन लेते हैं, तो बचेगा 1 प्लस 13 इज इक्वल टू 0. अगेन y प्लस 13 का अगेन कॉमन लेंगे तो y प्लस 13 फिर से, और बाकी है 2y एंड प्लस 1 बाकी है. सो दैट विल बिकम, therefore y plus 13 is equal to 0 or 2y plus 1 is equal to 0. Therefore y is equal to minus 13 or 2y is equal to minus 1. Therefore y is equal to minus 1 by 2.
ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ वाला करेंगे अभी। फाइव एम स्क्वायर इज इक्वल टू 22m plus 15. Now here first take it this side, 5m square minus 22m minus 15 is equal to 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 5 इंटू माइनस 15, तो 5 इंटू माइनस 15 और बन जाएगा माइनस 75। ओके, now we will split this, it will become 15 into 5, 25 into 3. This will fit here, 25 minus 3. So we will write this, minus is there, so minus plus. So minus 25 into plus 3 is equal to minus 75. Okay, minus 25 plus 3 is equal to minus 22. Okay, means this is right. We take it as m, take it as m. Now split this into 2. The 5m square minus 25m plus 3m minus 15 is equal to 0. See, sometimes you can write like this also, minus 3m minus 25 minus 15 is equal to 0. मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे कॉमन लेने में प्रॉब्लम आएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसे लिखो कि जहाँ पे कॉमन इजीली मिलता है आपको। यहाँ पे 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 5 15 ईजिली हो जाता है। यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, बट हियर टेकिंग कॉमन इज इजी। यू मे गेट कन्फ्यूजन हाउ टू टेक कॉमन इन दिस। ओके, so write in such a way that 5 into 5 25, 3 into 5 15. So easy ऐसा है, ऐसा भी लिख सकते हैं, it is also okay, but we will write this. Now take common, 5 is common, m is common, so m minus 5 plus, take 3 is common, m minus 5 is equal to 0. Again this, so you can m minus 5m plus 3 is equal to 0. So therefore m minus 5 is equal to 0 or 5m plus 3 is equal to 0. Therefore m is equal to 5 or 5m is equal to minus 3. Therefore m is equal to minus 3 upon 5. तो फर्स्ट अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसके बाद फैक्टर्स निकालना है। फाइंड दिस, ओके, इट विल कम बाय प्रैक्टिस ओनली। कौन सा नंबर यहाँ पे फिट होएगा, माइनस प्लस सब देखना है, देन ओनली इट विल कम। ओके, आई विल डू फिफ्थ प्रॉब्लम। टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस हाफ इज इक्वल टू 0। ना यहाँ पे फ्रैक्शन है हाफ, इट कैन क्रिएट ट्रबल, तो इसको पहले हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। सो विल राइट इट प्रॉपरली, तो इट विल गो हियर, इट विल गो हियर, इट विल गो हियर। 2 इंटू 2 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो इट विल बिकम 0। Now again 4 into plus 1, 4 into plus 1 plus 4, break it, 4 का पॉसिबिलिटी है, 4 into 1 2 into 2, यहाँ पर माइनस 2 है तो माइनस माइनस ले लेते हैं, तो इट विल बिकम माइनस 2 into माइनस 2 प्लस 4, दिस इज ओके। माइनस 2 इज माइनस 4, ओके, सो मीन्स दिस इज राइट। So take it as x, x. So now we will split this, 4x square minus 2x plus 1 is equal to 0. कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, so 2x come out,
अंदर बाकी है 2 इंटू 2 4, तो 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो x माइनस 2x बाहर ले लिया तो बचेगा -1। यहाँ पे कॉमन अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लेना। इफ देयर इज नो कॉमन टेक 1, ओके, नो कॉमन मीन टेक 1, नो कॉमन मीन्स टेक 1। तो इट विल गेट 2x -1 लेते हैं तो -1 दिया तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पे 2x -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो है सेम चीज़ आना चाहिए। यहाँ पे 2x -1 मीन 2x -1, इट शुड नॉट बी 2x + 1, ओके। सो माइनस माइनस प्लस, दैट्स वाई माइनस। then again same thing, 2x -1 is equal to 0. Sometimes same factors you can get, okay. Therefore 2x -1 is equal to 0, 2x is equal to 1, therefore x is equal to 1/2, or 2x -1 is equal to 0, 2x is equal to 1, therefore x is equal to 1/2. ओके, सिक्स प्रॉब्लम देखेंगे तो मोर प्रैक्टिस यू विल गेट, इट विल बी बिकम इजी फॉर यू, ओके। नाउ इन सिक्स प्रॉब्लम 6x - 2/x is equal to 1. First write in standard form, x go here, x here, so it will become 6x square - 2, 1 into x is x, so it will become x. Now take it this side, it will become 6x square minus x minus 2 is equal to 0. Now what is the next step? 6 into -2, so 6 into -2 is equal to -12, and middle term इन्होंने नहीं दिया तो -1 ले लेंगे, तो it will be 1, okay, it will be -1. So what are the possibilities? 12 into 1, 6 into 2, 4 into 3. दिस इज द पॉसिबिलिटीज। तो अभी देखते हैं इसमें तो कौन सा फिट हो रहा है, ठीक है। तो 6x square minus x minus 2 is equal to 0. So I think 4 and 3 will fit. 4 minus 3 is 1. ट्राई करते हैं, -4 plus 3 लेते हैं, -4 into plus 3 minus 12, okay, -4 plus 3 is equal to -1. Okay, and it is right, so we can take it as x here. So दोनों राइट होना चाहिए, अगर एक रॉन्ग हो गया तो फिर दूसरा फैक्टर्स लेंगे हम। I will split this, okay, it will become 6x square, -4x भी ले सकते हैं, 3x भी ले सकते हैं, ओके। मुझे लगता है ये पहले लिख सकते हैं क्योंकि 6 and 3 कॉमन इजी होगा। ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, -3x plus 3x minus 2। आई कैन राइट इट लाइक दिस, बट यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे ग्रुप करो जो इजीली फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है फर्स्ट ये लिखेंगे तो इजी हो जाएगा आपका। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं बोला कि नहीं कर सकते हैं, तो पर हम इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। सो इट विल बिकम 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी कॉमन लेंगे, यहाँ पे 3 कॉमन है एंड x कॉमन है, तो 3 इंटू 2 बचा है, 2x प्लस 1 बाकी है। तो यहाँ पे -2 कॉमन है बिकॉज 2 इंटू 4 -2 कॉमन है, तो 2x प्लस 1 बचेगा। तो अभी इसको फिर से कॉमन आ गया तो बचेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2 और 3x minus 2 is equal to 0, so 3x is equal to 2, therefore x is equal to 2/3. ओके, ये बॉक्स वाला करते हैं अभी, डू दिस, ओके।
यहाँ पे उन्होंने बॉक्स दिया है, ये सब कंप्लीट करेंगे रूट का। ओके, सो डू 7th प्रॉब्लम। उन्होंने बॉक्स दिया है, हमको बॉक्स कंप्लीट करना है, बट फर्स्ट सेम लॉजिक यूज़ करेंगे। √2 इंटू प्लस, सो √2 इंटू प्लस 5√2, √2 2, okay, √2 into √2 is 2, √3 into √3 3, okay, that is it now. So this will become √2 into 2, √2 is 2, so 2 into 5, that is equal to plus 10. Now plus 10 in middle 7 is there, okay, in middle में है plus 7, very simple. 10 into 1, 5 into 2, 5 into 2 फिट हो जाएगा इजीली, plus 5 into plus 2 is equal to plus 10, fitting, and plus 5 plus 2 is equal to plus 7. यहाँ पे फिट हो रहा है, यहाँ पे फिट हो रहा है, मतलब ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे इट इज ओके। तो यहाँ पे x लेना है, यहाँ पे x, so that will become 5x, ओके। तो यहाँ पे आएगा 5x, यहाँ पे आएगा 2x, 5x और 2x। एंड उसके बाद इसमें कॉमन लिया है उन्होंने। कैसे कॉमन दिया है यहाँ पे देखो, कॉमन कैसे दिया देखते हैं। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे √5 कॉमन है, तो तो x विल कम आउट, x आएगा, बचेगा √2x, बिकॉज x² है तो x बचेगा और 5 बचेगा इधर, प्लस यहाँ पे उन्होंने √2 कॉमन लिया। हाउ? बिकॉज दिस 2x प्लस 5√2, यू कैन राइट इट लाइक दिस, √2x प्लस 5√2, so √2 common, okay, so that will become √2x प्लस 5 बचेगा इधर। So that's why we have to take like this, okay. तो इसमें कॉमन क्या आएगा, √2, सॉरी x विल कम आउट, x आएगा, बचेगा √2x प्लस 5, यहाँ पे आएगा फिर √2 आएगा, बचेगा अंदर √2 प्लस √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सेम चीज, सो वी राइट इट हियर, √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, then this will come here, x प्लस √2 उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, तो यहाँ पे बचेगा √2x प्लस 5, and here therefore you will get this √2x plus 5, so here it will go minus, so √2x plus 5 is equal to 0, √2x is equal to minus 5, therefore x is equal to minus 5 upon √2, that you will get here, this part, minus 5 upon √2, and that is the answer here, minus 5 upon √2. It is important, okay, because यहाँ पर √2 सब इन्वॉल्व है, ये ऐसे सॉल्व करना है। Now we will do next one. It is also similar to √2 के ऊपर ही है, देखते हैं 8 वाला कैसे करेंगे।
Okay, same step. 3 into plus 2, 3 into plus 2 plus 6 एंड मिडिल है माइनस 2√6 है. तो इसको हम कैसे ब्रेक कैसे करेंगे? ओके, सो हियर you should know that 6 into 1, okay, and 2 into 3, बट यहाँ पर रूट है मीन फिटिंग नहीं हो रहा है, बट वी नो दैट √6 into √6 इज इक्वल टू 6, सो √2 into √2 इज इक्वल टू 2. तो ये भी फिट करके देखेंगे हम, ये पॉसिबिलिटी को भी. ओके, यहाँ पर लेंगे √6. तो नाउ वी विल डू दिस. ओके, बिकॉज माइनस इज देयर, माइनस √6 into माइनस √6 प्लस 6. ओके, माइनस √6 तो यहाँ पर 1 ले लेंगे, इसके आगे 1 तो -1 इज इक्वल टू -2√6. सो दैट इज ओके, मीन दिस इज राइट. Now you have to just put the value of x. इसको यहाँ पे फिट करेंगे तो 3x² माइनस, इसको ब्रेक करेंगे माइनस √x 6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है ना, यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पे थोड़ा ट्रिक है, क्योंकि this is √6, okay, and that how to write this. इस 3 को ब्रेक करेंगे. ओके, 3 को ब्रेक करेंगे √3 into √3 x², एंड इसको ब्रेक करेंगे √3 into √2. वाई? बिकॉज √3 into √3 बनेगा 3 एंड √3 into √2 ये बन जाएगा 3 into 2, इट विल बिकम √6. सो इसको ब्रेक करेंगे then only we can get common, unless we break it we will not get. Okay, so here also same thing, minus √3 minus √2 x, एंड 2 को भी ब्रेक करेंगे √2 डॉट √2 इज इक्वल टू 0. So that you have to understand. Okay, how 3 is √3 into √3, 3 बन जाएगा √3 into √3, √6 बनेगा √3 into √2. फिर से ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया. ये स्टेप करेंगे तभी हम कॉमन ले सकते हैं. विदाउट दिस स्टेप वी कैन नॉट टेक कॉमन. अब इजी हो जाएगा आपके लिए. ये है एंड यहाँ पे x है, x है कॉमन, तो बचेगा √3x बाहर आ जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर √3 एंड एक x बाकी है माइनस √2 अंदर है, तो ये आ जाएगा. एंड यहाँ पे कॉमन क्या है? √2 कॉमन है, तो बन जाएगा √2 बाहर आ जाएगा एंड अंदर बचेगा √3 और x बचेगा प्लस √2, 1 √2 बाकी है, ये बचेगा. अब ये दोनों, सॉरी हमने माइनस बाहर लिया तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि माइनस प्लस इसके लिए, एंड ये और ये मैच होना चाहिए, तो हमको मैच हो गया. तो अब इसको हम बाहर लेते हैं, तो बनेगा √3x माइनस √2. ओके, एंड इसको लिखते हैं फिर से √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0. तो दोनों सेम आया है, इसमें कभी कभी हो जाता है सेम. सो देयरफॉर √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर √3x इज इक्वल टू √2. Therefore x is equal to √2 upon √3. एंड इसका भी वही आएगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0. सो √3x इज इक्वल टू √2. Therefore x is equal to √2 upon √3. So this is important step. Okay, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लो कैसे सॉल्व करना है. आई होप यू गॉट दिस, समझ में आ गया मुझे लगता है.
नहीं समझा तो मुझे ईमेल कर देना, then I will help you that particular part, or any other problem I can help you, okay, in other video. But I hope you got this. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। नाइन्थ प्रॉब्लम, 2m m minus 24 is equal to 50. ठीक है, तो we'll multiply this 2m into m, 2m square, 2 into 24, that is 48, m is remaining, m is equal to 50. तो ये 50 को इधर लेते हैं, 2m square minus 48 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो एज यूजुअल हम ये करेंगे +2 इंटू माइनस, तो 2 इंटू माइनस 50 माइनस 100, फिर ब्रेक करेंगे। बट कभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है, 2 इज कॉमन एवरीवेयर, सारे जगह में 2 कॉमन है। तो इतना बड़ा बड़ा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, आई मीन देयर इज नो नीड फॉर बिग नंबर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। So 2m square minus 48 minus 50 is equal to 0. Divide by 2 both side, okay। क्या मिलेगा, m square, इसमें डिवाइड हो जाएगा 48 by 2, 2 by 2, 48 by 2, 50 by 2, तो बनेगा ये -224m, सॉरी इधर m था, एंड -25 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप हमेशा सिंप्लीफाई करो, फर्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई, मेक इट स्मॉल, मेक इट सिंपल, देन यू डू, ओके। नाउ यू टेक इट एज 1 हियर, 1 इंटू -25, 1 इंटू -25 -25 ब्रेक करेंगे, हमको -24 मिडिल में है, तो कैसे ब्रेक करेंगे, 25 इंटू 1, 5 इंटू 5, तो मुझे लगता है इजीली फिट हो जाएगा, माइनस एंड प्लस, तो यहाँ पे m लेंगे, m पे m लेंगे। तो इसको ब्रेक करेंगे तो बनेगा 1m स्क्वायर एंड -25m प्लस 1m -25m, सॉरी -25 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे इसमें, यहाँ पे है m कॉमन है, बस दूसरा कुछ नहीं है, m इंटू यहाँ पे बचेगा 1m -25, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, 1 बचेगा, 1m -25 इज इक्वल टू 0। तो इधर आएगा 1m -25 एंड m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो फोर 1 को ड्रॉप भी कर सकते हैं, इसको अननेसेसरी थिंग। सो m -25 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू -25, सॉरी +25 बिकॉज माइनस था, m इज इक्वल टू -1। तो ऑलवेज सिंप्लीफाई करो, उसके बाद सॉल्व करो, इट इज नॉट लाइक सीधा सीधा, ओके। नेक्स्ट वन विल से 10th प्रॉब्लम, हाउ टू डू 10th। 10th इज वेरी इजी, 25m square is equal to 9, okay। So what to do, take it this side, 25m square minus 9 is equal to 0। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, ये टर्म नहीं दिया है, इट इज़ नॉट गिवन, ओके। तो इफ इट इज़ नॉट गिवन देन फॉलो a माइनस b, a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला यूज करो, ओके। तो इसको हम स्प्लिट करेंगे, देन फॉलो दिस इज नॉट गिवन, m इज नॉट गिवन, m स्क्वायर दिया, m स्क्वायर के बाद m नहीं दिया, तो हम ये मेथड फॉलो करेंगे, दिस मेथड, ओके। तो इसको लिखेंगे हम 5m, बिकॉज 5 स्क्वायर 25 होता है, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बिकॉज 3 स्क्वायर इज
3 स्क्वायर इज 9। तो अभी हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मूला यूज़ करेंगे तो क्या फार्मूला क्या हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये बनेगा 5m माइनस 3, 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। therefore 5m minus 3 is equal to 0, 5m is equal to 3, therefore m is equal to 3 upon 5, or 5m plus 3 is equal to 0, therefore 5m is equal to minus 3, therefore m is equal to minus 3 upon 5. तो 11th वन करेंगे। Even 11th same logic is used, 7m square is equal to 21m. okay, bring it this side. okay, 7m square minus 21m is equal to 0. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी एक प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सी टर्म नहीं दिया उन्होंने, कांस्टेंट नहीं दिया। सो वेरी इजी, सिंपली कॉमन लेना है। देन सिंपली टेक कॉमन। ओके, टेक कॉमन, कॉमन लेना है, बस वही करना है इसमें। तो यहाँ पे 7 इंटू 3 21, तो 7 कॉमन है, m कॉमन है, तो अंदर बचेगा m एंड माइनस 7 इंटू 3, सो 3 इज इक्वल टू 0। तो 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। therefore m इज इक्वल टू 0 अपॉन 7 और m इज इक्वल टू 3। नाउ therefore m इज इक्वल टू 0। ऑलवेज रिमेंबर 0 बाय 7 0 आएगा, 7 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। ओके, तो इसका रूट्स है, क्या रूट्स है? तो रूट्स आर 0 एंड 3। लास्ट प्रॉब्लम करेंगे, लास्ट प्रॉब्लम 12th। m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं दिया है, सो मीन you have to use that formula, a square minus b square, that formula. okay, so पहले इसको properly लिखते हैं। तो take it as m square, it is not fitting in square, so take it as root 11 the whole square is equal to 0। okay, अगर ऐसा होता तो m square minus 9 is equal to 0, तो m square minus 3 the whole square is equal to 0 we can take, but here 11 we cannot take, means root 11। okay, and I can use formula. What is the formula? A square minus b square is equal to a minus b a plus b. That formula will use it, m plus m minus root 11, m plus root 11 is equal to 0. Therefore m is equal to root 11 or m is equal to minus root 11. So next video I will teach completing the square. okay, I hope you understood this. Practice more. okay, next is okay, it is the next video. okay, bye.